हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, कैसे जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या है और कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होती है कैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराती है। आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी वेव्स, इंटरवल्स, सेगमेंट्स। तो व्हाट इज़ एन ईसीजी? ECG, it is nothing but the graphical representation of electrical activity occurring in the heart on a ECG paper. ECG जो हमने पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होती है, उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना ऑन द पीस ऑफ पेपर विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड द मशीन विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. It is based on the principle of galvanometer, which detects the current according to the polarity. So have a look on how ECG paper strip look like. This is a basic ECG. You are seeing ECG paper. There are some large squares and in between there are some small squares. One large square, one big square contains 5 small boxes. 5 this one and 5 this one, 5 by 5. Speed of paper is set is in such a way that which is about 25 millimeter per second, that in a minute time taken to pass 300 big square under needle equals to 1 minute. We can say that 1 minute equals to 60 seconds. So अगर हम एक स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन निकालें या एक बिग बॉक्स की ड्यूरेशन निकालें तो कितनी हुई 60 डिवाइडेड बाई 300 विच इज़ अबाउट 0.04 seconds, और in millisecond equals to 40 millisecond. This is the duration of one small box. So this is the box 5 by 5, 5 square this one, 5 square this one. So 5 multiply 0.04, 5 multiply 0.04 equals to 0.20 seconds. So one large square duration is 0.20 second and one small square duration is 0.04 seconds. अगर हम वेव्स को एक्सिस पे प्लॉट करें तो दिस इज़ द बेसिक एक्सिस, दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस. सो above is plus, below is negative. Any wave which is above on the axis is called positive wave, and which wave below the axis is called negative wave, basic. And y axis, this one is measured in the volt and time is measured in the seconds. If we check the height of a small box, it is about 1 by 1 mm. 1 mm equals to 0.1 millivolt and 1 mm in the duration equals to 40 millisecond. So same as for large box, 5 mm, this one is volt in height, 5 mm or 0.45 millivolt, and the duration we have calculated earlier is for 0.04 for small box, and this one is 5 box, so about 200 milliseconds. हमने बेसिक फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि हमारा एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है. तो एक कार्डिक साइकिल में हमारे 20 लार्ज बॉक्सेस कवर हो जाते हैं. सो ये हमारा बेसिक हार्ट है, हमने पहले भी देखा. ये एस नोड, ये ए वी नोड. हमने यहाँ पढ़ा था कि एस नोड से करंट एट्रियम में जाता है, फिर ए वी नोड में जाता है, फिर बंडल ऑफिस में लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, देन पुरकिंजे फाइबर्स. सो जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एस नोड से जनरेट होगी, यहाँ पर एट्रियम में जाएगी तो हमारी पी वेव जनरेट होगी. देन करंट पास होगा ए वी नोड में, जो रिप्रेजेंट करेगी लाइन स्मूथ लाइन, क्योंकि करंट यहाँ पे ए वी नोड में 0.1 मिली सेकेंड के लिए डिले रहेगा, विच इज़ कॉल्ड ए वी नोडल डिले. देन
AV नोड से करंट पास होगा वेंट्रिकल्स में which generates Q wave. Then करंट पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में मेजर पार्ट में, देन राइट वेंट्रिकल में मेजर पार्ट में, देन वेव जनरेट होगी आर वेव. देन करंट पास होगा मेजर सेप्टल एरिया में विच इज़ कॉल्ड सेप्टल डिपोलराइजेशन. देन वेव जनरेट होगी एस वेव. देन दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन where no electrical activity occur. Then फिर से एट्रिया वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा विच सिग्निफाइज टी वेव. तो हम बेसिक एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन सी वेव कैसे जनरेट हुई और क्या बेसिक सिग्निफाई कर रही है. हमने ऊपर पढ़ा कि एट्रियल डिपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पी वेव जनरेट रही. पी वेव डिनोट्स फॉर atrial depolarization. This line signifies AV nodal delay. This is Q wave which signifies septal depolarization. This is R wave which signifies major ventricular depolarization. This is S wave which signifies basal ventricular depolarization. This one is J point or isoelectric line where there is no electrical activity in the heart, and this one is T wave which signifies ventricular repolarization. This one is U wave. This is not normally seen in the ECG because it is low amplitude. As you can see the height of the U wave, this wave is for short amplitude, that's why it is masking behind the ventricular repolarization. This U wave is produced by the contraction of the papillary muscle. This is the left atrium, left ventricle. This one is aortic wall. This one is mitral wall. And in green there is chordae tendineae which attaches to the walls of the heart, and the chordae tendineae attaches to the some muscles which is called papillary muscles which contracts and the opening and closing of the valves, and the U wave generates. Till now we have studied the basics of ECG paper and the waves of ECG. So let's have a look on the intervals and segments of the ECG paper. From the starting of the P wave and the ending of the starting of Q wave signifies PR interval. The starting of the Q wave and ending of S wave represents QRS interval, and the starting of Q wave and ending of T wave signifies QT interval. The ending of P wave and the starting of Q wave represents PR segments which signifies AV nodal conduction. This is J point or isoelectric point where there is no electrical conductivity in the heart. The ending of S wave and the starting of T wave represents ST segment. Let's have a look on the duration of waves and intervals. If a person have heart rate almost about 72 beats per minute, which is normal heart rhythm. So this is wave, the duration of wave and the amplitude of wave. The first one is P wave, which fitted into 2.5 to 3 small squares, and the time taken it's less than 120 milliseconds, and its amplitude is less than 2.5 millimeter in height. And for PR segment is it fits into 3 to 5 small squares, duration is 120 to 200 milliseconds, and for QRS complex is 2 to 2.5 small squares, duration is 80 to 100 milliseconds, and for Q wave is less than 1
small square and duration is less than 40 milliseconds. For QT interval is it fits into 9 to 11 small squares, duration is 360 to 140 milliseconds. And for PR interval it fits into 3 to 5 small squares or about 120 to 200 milliseconds. And for T wave is its amplitude is less than 5 mm in height. So let's have a quick review. P wave 2.5 squares or 3 squares. PR segment is 3 to 5 squares. QRS complex is 2.5 squares. Q wave is less than 1 square, small square. QT interval is 9 to 11 squares, and PR interval is 3 to 5 squares. This one, PR interval is 3 to 5 squares, and for T wave is the amplitude less than 5 mm. That's it.